And let's get you the top story that we're tracking today. Amid the farmers' agitation at Delhi borders, the centre has reached out to farmers across the country. A day after increasing the sugarcane price paid by mills to the farmers, today Prime Minister Narendra Modi, who was in Gujarat, addressed dairy farmers. He addressed the Golden Jubilee celebrations of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. Prime Minister Modi spoke about the unwavering commitment of his government to ensure the welfare of all farmers, bringing in progress and development. विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। Now, the message was not just limited to this, sending out a message of diversification and inclusive development in the agriculture sector. Prime Minister Narendra Modi underscored that dairy sector was worth 10 lakh crore rupees and is worth more than the turnover of wheat, rice and sugarcane combined. In his 23-minute-long speech, Prime Minister Modi also dedicated a significant amount of time speaking of how women form the backbone of the dairy sector and also emphasized on the significance of strengthening their financial status to take India ahead. 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है, उसकी करीब 70% लाभार्थी बहनें बेटियां ही है। जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं, उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है। हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता।
Now, this outreach comes even as once again the centre has reiterated that the government is always ready for discussions with protesting farmers, calling them Annadatas. Union Minister Anurag Thakur said that channels of communication have been consistently kept open. हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं और इन सबके लिए रिकॉर्ड काम किया है। Techri is joining us live. Techri, as the centre sends out a strong message and an outreach to the nation's Annadata, tell us about what's happening with the protests. Well, certainly first talking about the message that is being sent by government. So first let us talk about the social media post that was, made by Prime Minister Modi himself, where he in fact appreciated or in fact lauded the decision taken by the centre government as far as FRP for sugarcane is concerned. Because remember that yesterday there was an important meeting that took place in which a big decision was taken that the FRP for sugarcane is being increased for ₹25. And then there comes a social media post, and then government is in fact certainly hailing this decision as far as FRP for sugarcane is concerned. On the other hand, if we talk about the farmers, then farmers are still. Remember that there is, yes, important meeting set to take place today also, where they are going to talk about the atrocities on farmer, the one farmer who died, and of course how will they talking out the further strategy. 2 days, the protest however has been put on hold for 2 days, and then further they will be deciding after next course of meeting will take place with the government so as to what to do. Right. So what is the strategy when it comes to the farmers and the talks that are currently going on with the government? Right now, we can see that there is an outreach made from the Prime Minister, the message that he sent to the farmers from Gujarat, and also the Union INB Minister also says that channels of communication are always open. But the farmers currently once again are re-strategizing, especially after the death of another farmer. So where have the talks now hit a deadlock? Well, talks are certainly not, have not reached to a consensus, because remember that now is latest statement coming from Union Minister Anurag Thakur, and earlier in the morning we saw a statement coming from Arjun Munda, where himself he was the part of the meeting in the several meetings that were held, 4 meetings in fact that were held. In fact, government itself had put a proposal in front of the farmers, and in fact farmers had rejected the proposal, but government is again and again repeatedly saying that talks is the only solution which could bring a consensus, and that is why they are holding back-to-back meetings. Yes. And we need to see that how the 5th round of talks will unfold, because yes, as of now we have seen that 14,000 farmers, for 14,000 in fact farmers, along with several thousands of tractors and families of farmers were also protesting. So Techri, stay with us, because we are seeing on one hand there is an outreach from none other than the Prime Minister. The Union INB Minister has also said that all lines of communication are open. On the other hand, politics is continuing unabated, and this time it is the RJD. The RJD at this point of time is once again dismissing the Prime Minister's Kisan outreach. What has the RJD said? Listen in. भाई, किसानों से आप बात करना चाहते तो इतना कहने की आवश्यकता नहीं होती। आप आज गुजरात का दौरा रद्द करके किसानों के साथ बैठ जाते हैं और किसानों के समग्र सोच और समग्र मांग पर विस्तार से चर्चा करके उनके हितों का ख्याल रखते हुए किसानों के लिए MSP तय करने का अधिकार, उनको जो व्यवस्था है बेहतर से बेहतर वो व्यवस्था उपलब्ध कराने का, और साथ ही उनके द्वारा जो बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं या जो बिजली कहीं ना कहीं मीटर सिस्टम से उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि किसान अगर मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा, और देश मजबूत तभी होगा जब किसान के साथ देश का आवाम खड़ा होगा।